Hello, my dear competitive aspirants. Welcome to the MEDIITRATOR Academy YouTube channel. Now, last video we discussed GS1. Now, in this lectures, we will discuss GS2 of UPSC and MPSC mains, right? So, UPSC, MPSC mains, right? GS2. Okay. So, the GS2, the statement of GS2 given by the UPSC, MPSC, right? Governance, constitution, polity, social justice, and international relation. This is the syllabus of GS2, right? GS means general studies 2, है ना? Governance, constitution, polity, social justice, and international relations. Okay, this is the statements of GS2 syllabus, right? Dear aspirants, हम अभी यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं? द गवर्नेंस एक, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट? 5 सब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो हम देखेंगे वन बाय वन. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, या इस सिलेबस को हम डिकोड करेंगे सब्जेक्ट्स में, फिर उसके पॉइंट्स में. ये नोटिफिकेशन में आपको पॉइंट वाइज मिक्सिंग दिए हैं, तो आप बिगिनर्स हो या फिर 2 साल हुए तो भी आप कंफ्यूज होंगे कि कौन से किसके पॉइंट्स है. तो हम सेग्रीगेट करेंगे, डिकोड करेंगे, ताकि आपको नोट्स निकालने में या फिर जब भी आप किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हाँ कि ये इस सब्जेक्ट के टॉपिक्स है, ताकि आप किताब उस हिसाब से पढ़ोगे और आपके नोट्स निकलेंगे, राइट? और कंसोलिडेट होंगे. ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग, historical underpinning, evolution, evolution of constitution, basics, features, basic structure, amendments, and significant provisions, etc, right? Now, the first point of general studies 2 मेंस पेपर, राइट? तो ये भी 250 मार्क्स का और 3 आवर्स. ओके, इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स, द हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे बना, राइट? फिर उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, बेसिक फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ना, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल, राइट? एंड अमेंडमेंट्स कैसे हुए, कितने हुए, कब होते हैं, राइट? और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे. इसके लिए फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए क्या पढ़ना, तो इसके लिए लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ है. उससे और पढ़ना चाहते हो तो पीएम बख्शी की किताब है, ठीक है, वो पढ़ सकते हो, राइट? दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सेकेंड पॉइंट, द कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन with their of other countries. The comparison of Indian constitution, sorry, the comparison of Indian constitution scheme with their of other countries constitution. Okay,
So this is the 2 points under the constitution, right? These are available in polity, Lakshmikant. Okay, second, the polity, right? The polity. Second point, polity. The polity, the sub point of polity, function and responsibilities of union and state. Functions and responsibilities of union and state. Issues and challenges pertaining to their federal structure. Devolution of power and finances up to local level, and challenges therein. Separation of power between various organ, dispute redressal mechanism and institution. माय डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे देखिए द पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर पॉइंट 1 है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन स्टेट, एंड यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो पढ़ना है। इसके लिए बी लक्ष्मीकांत, द पॉलिटी, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू देयर फेडरल स्ट्रक्चर, जो भी उनका फेडरल स्ट्रक्चर है उनमें इश्यूज एंड चैलेंजेस है ना, जो भी है वो एड्रेस करना है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर है ना, ट्रांसफर ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल, जो भी लोकल लेवल पे फाइनेंसेस उसमें क्या चैलेंजेस है और क्या इश्यूज है वो। द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो भी टू पार्टीज में या टू कंपनीज में या फिर टू एंटिटी में जो भी डिस्प्यूट्स है उसको अब सॉल्व करने के लिए जो भी ऑर्गन है उसमें पावर का सेपरेशन, वो भी इश्यूज है। मतलब आपको पहले ही बताया कि यूपीएससी कौन से पॉइंट्स पे सिलेबस से पता चलता है कि यूपीएससी जो भी इवेंट्स चलते हैं, जो भी अपनी फंक्शनरीज है उसमें क्या इश्यूज है वो एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो पढ़ते समय और स्टैटिक्स पढ़ते समय, बुक्स पढ़ते समय या फिर करंट अफेयर पढ़ते समय ये आपको ध्यान देना है कि जो भी हमारे फंक्शनरीज है, जो भी हमारे ऑर्गन है उसमें क्या इश्यूज चल रहे हैं लेटेस्ट में, और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मीन स्टैटिक्स प्लस करंट, ऐसे हिसाब से आपको नोट्स पॉइंट्स निकालने हैं और कंसोलिडेट करने। ओके, दिस इज द फंक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इश्यूज चैलेंजेस पर्टेनिंग टू देयर फेडरल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, organization, parliament state structure, organization, functioning, right? Conduct of business, power and privileges, and issues arising out of these.
देखिए यहाँ पे भी इश्यूज, द पार्लियामेंट एंड स्टेट फंक्शन एंड यूनियन एंड स्टेट, सेकंड पॉइंट है यूनियन का पार्लियामेंट एंड स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर, उनका स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर, उसका ऑर्गेनाइजिंग एंड फंक्शनिंग, उनका कंडक्ट ऑफ बिजनेस, है ना, द पावर, देयर इज पावर एंड सम प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, और इनमें से आने वाले इश्यूज, ये सब आपको एड्रेस करना है, ये समझना है कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या बोल रहा है, राइट, उसी हिसाब से किताब पढ़ना है। ओनली फर्स्ट पेज से लास्ट पेज पे किताब पढ़ के कुछ मतलब नहीं है, सब चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है। जो जो एग्जाम दे रहे हो, जिस हिसाब से एग्जाम का सिलेबस फॉर्म हुआ है, उस हिसाब से ही पढ़ना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट्स, राइट, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, right, structure, functioning, organization and executive and judiciary ministry of departments of government, right, appoint to various constitutional post, power, functions and responsibilities to various constitutional bodies, right. Next, pressure group, formal, informal associations and their role in polity, right. Statutory, regulatory and various quasi judicial bodies. Okay, now dear aspirants, you have to see here the structure and functioning of organization of executive and judiciary, right, and ministries of department of government, appoint to various constitutional posts for functions and responsibilities to various constitutional bodies, right. ये बताया द प्रेशर ग्रुप्स, जो भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी, जो भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं अपनी इंडिया में, है ना, उनका रोल क्या है पॉलिटी में, ये पढ़ना है। जब भी आप कोई भी बुक्स करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो वहां पे प्रेशर ग्रुप आया, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस आए, तो उनके पॉइंट्स निकाल के रखना जरूरी है। इसलिए ये आपको डिकोड करके दिए हैं सिलेबस, ताकि आपको वो नोट्स निकालने में आसानी हो। इसलिए सबसे पहले आप लाइब्रेरी में घर में पढ़ते समय आपके पास सिलेबस के 2 या 3 कॉपीज होनी चाहिए, लाइब्रेरी में एक, घर में हो तो एक, राइट। और आपको नहीं होता तो बाय हार्ट कर सकते, तो बाय हार्ट कर लीजिए, राइट। तो pressure group, formal informal association and their role in polity, statutory, regulatory and various quasi judicial bodies, means in the polity some bodies are constitutional, some non constitutional and other constitutional, means some bodies formed by the constitution and some bodies by the government law, right. So these are the bodies, है ना, which are present in the polity Lakshmikant, right. So you can learn from these books, right. So this is the polity. Next, moving toward the governance.
right? Now the governance importance, important aspects of governance, important aspects of governance: transparency and accountability, right? There is the transparency and accountability. These are the important aspects of governance, right? E-governance applications, models, successes, limitations, potential, citizen charter, transparency, accountability. देखो important aspects of governance: transparency, accountability, e-governance, application, model, success, limitation, potential, citizen charter, transparency, accountability, and institutional and other measures. Institutions, other measures. Okay. And third point, role of civil services in democracy, right? And last one, represents silent features of representation of People's Act. Okay, this is the governance points, right? These are the important aspects of governance: the good governance, transparent and accountable, right? Then the e-governance application, उसके models, successes, limitations, potential, citizen charter, transparent, accountability and institutional other measures, right? And role of civil services in democracy, जो भी आप आईएएस बनना चाहते हैं तो उनका रोल इन डेमोक्रेसी में क्या है वो, और साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट्स है ना, और आरपी एक्ट है ना, वो आपको पढ़ना है, राइट? जो भी है आपको इसके नोट्स निकालने हैं। ये हो गया हम क्या क्या कवर किए: गवर्नेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, पॉलिटी हुआ, एंड सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल बाकी है, राइट? सो नाउ मूविंग टुवर्ड द सोशल जस्टिस, राइट? ये नोट डाउन करना जरूरी है। Now moving towards the social justice, right? Fourth, first point, सोशल जस्टिस मीन सामाजिक न्याय। तो इसके लिए कौन सी बुक नहीं है, इसके लिए बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स जो भी आप मैगजीन मंथली या ईयरली जो भी पढ़ते हो, या फिर हिंदू एडिटोरियल्स या फिर इंडियन एक्सप्रेस जो भी एडिटोरियल्स पढ़ते हो, वहां पे यदि आपको ये सिलेबस याद है और आप ये पॉइंट्स पता है तो आप उससे पॉइंट्स के नोट्स निकाल लो, ताकि आपको आसानी होंगी। और यही से क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से, जो भी करंट इश्यूज है, जो सोशल जस्टिस है, उसमें से जो भी सिलेबस के पॉइंट्स है उसके नोट्स बनाओ करंट अफेयर से, उसी से आएंगे, राइट? तो इसके लिए सेपरेट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर development, government policy and intervention for the development in various sectors,
service sectors and and issues arising out of design and implementation, right? The government policies and interventions for the development various social and service sectors and issues arising out of their design and implementation, right? Next, development processes and development industries, that is role of NGO, SHG means self-help groups, various groups and associations, donor charities, institutional and other stakeholders. Dear aspirants, दिस इज द सोशल जस्टिस मीन सामाजिक न्याय. व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसी? जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं कि सोशल जस्टिस के लिए होते, राइट? मतलब कि समाज के लिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है जो बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, राइट? द इंटरवेंशंस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है डेवलपमेंट इन द वेरियस सोशल एंड सर्विस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सर्विस सॉरी पॉलिसीज होती है, उनके जो योजनाएं होती है, उनमें इश्यूज क्या अराइज होते हैं उनके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में, है ना? जो योजना है, कभी कभी गवर्नमेंट अच्छी योजना निकालते लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं होती ग्राउंड लेवल तक. तो क्यों नहीं होती? क्या प्रॉब्लम्स है, क्या होते हैं? मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन में, वो हायर टू लोअर में कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, राइट? लाइक करप्शन, है ना? तो वो सब सोशल जस्टिस में आएंगे. नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, लाइक रोल ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट? है ना? बचत गट, राइट? नॉन गवर्नमेंट एनजीओ है, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, some donors, some charities and institutions and other stakeholders, right? ये भी सोशल जस्टिस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट, मूविंग थर्ड पॉइंट्स, राइट? द वेलफेयर स्कीम्स फॉर द welfare schemes for the vulnerable sections of population by center and state, by center and state, right? The welfare schemes for the vulnerable section of population by center and state. The performance of the scheme, the performance of the schemes, mechanisms, laws and institutions. Okay, constituted bodies for the protection and betterment of the vulnerable sections, right? Now you can see the welfare schemes for the vulnerable section of population by center. जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से जो भी वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती है ना? उनके परफॉर्मेंस क्या मैकेनिज्म्स है, क्या लॉज है, उनके इंस्टीट्यूशंस है, वो सब, और कॉन्स्टिट्यूट सम बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं फॉर प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन, है ना? जो भी वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, वल्नरेबल कौन है?
द वुमेन्स, सम चाइल्ड्स, है ना, जो भी है वल्नरेबल, राइट, उनके लिए गवर्नमेंट, है ना, महिला योजना, राइट, ऐसे रिलेटेड योजनाएं बनाई जाती है, मतलब by center and state, right? These are the some mechanisms and laws and institutions, right there. So next point, right, issues relating to the development and betterment of vulnerable section, including and social sectors, right, including health, education, human resources, HR, etc., right. And last one, issues relating to poverty and hunger. Okay, now the last point of social justice, है ना, we had discussed the issues is important for the UPSC. The issues relating to the development and betterment of the vulnerable section means social sector, including health related, education and human resource. इस related आपके पास एक नोट्स होने चाहिए जो हेल्थ रिलेटेड, जो भी करंट अफेयर में आते हैं, एजुकेशन रिलेटेड, है ना, जो ह्यूमन, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, राइट, तो वो जरूर क्वेश्चन मेंस पे आएगा अगले साल में, नहीं तो इस साल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और ह्यूमन रिसोर्स, है ना, यहाँ पे आपको नोट्स बना के रखना है, वो भी इसके फैक्चुअल्स, क्या गवर्नमेंट के स्कीम्स थे, क्या हुआ था, और अभी क्या लेटेस्ट ट्रेंड है, और अभी लेटेस्ट क्या प्लानिंग चल रही है, राइट, ये सभी, और उसमें क्या इश्यूज आए और आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ताकि आपका इस डायरेक्टली आपका मेंस का आंसर बन जाएगा, राइट। इश्यूज रिलेटिंग टू द पॉवर्टी एंड हंगर, एंड लास्ट पॉइंट इज इश्यूज रिलेटिंग टू द पॉवर्टी एंड हंगर। ये पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, इसका ऊपर डेटा, है ना, फैक्ट्स, फैक्ट्स प्लस करंट अफेयर, ये दोनों डेटा आपके पास होने चाहिए विथ फैक्चुअल्स, राइट। ये हो गया सोशल जस्टिस। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनल रिलेशन, राइट। सो द फिफ्थ, इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। सो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, बाइलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और इंडियाज इंटरेस्ट। ओके, मींस इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है पूरे लिख लेते, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और इंडियाज इंटरेस्ट, राइट। गवर्नमेंट policies and politics of developed and developing countries, government policies and politics of developed and developing countries,
and their effects India's interest and Indian diaspora, right? And last point, important international institutions, agencies, and fora, their structure and mandate. And here the GS2 is over, right? So the last point of this GS2 General Studies Paper 2, the international relation, the bilateral, regional, global grouping and agreement involving India's affecting interests, right? मतलब बायलैटरल इंडिया और इंडिया के साथ या फिर उसके रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग और वर्ल्ड के साथ, है ना, और उनके एग्रीमेंट्स, उनके साथ जो भी इंडिया के रिलेशंस है और इसका रिलेशंस का इफेक्ट्स इंडिया के ऊपर क्या होता है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलता अपना इंडिया का बायलैटरल मीन्स अब अपने इंडिया का नेबर के साथ, है ना, वर्ल्ड के अदर कंट्री के साथ या फिर उनके बीच में बहुत सारे कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट्स लाइक दैट, राइट? सो ये आपको न्यूज़पेपर से पता चलेगा कि आपके इंडिया के किस देश के साथ कौन से ट्रेड है, कौन से टाइप के रिलेशंस है, राइट? ये आपको नोट डाउन करना है। उसके पहले उनकी पास्ट हिस्ट्री, ये फैक्चुअल्स डेटा होना चाहिए, राइट? गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, इफेक्ट्स ऑफ, राइट, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री, राइट, ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। जो भी गवर्नमेंट डेवलप कंट्रीज की पॉलिसीज है एंड पॉलिटिक्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज की जो भी पॉलिसीज है एंड उनका पॉलिटिक्स वो इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, वो भी पॉइंट्स। और लास्ट में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज फॉर अदर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, मींस इंटरनेशनल एजेंसी मतलब यूएन, इंडिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स और साउथ ईस्ट एशिया, सार्क, राइट? तो ये G20, ये सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है और एग्रीमेंट्स और उनके बीच में जो भी रिलेशंस है उसका इफेक्ट्स, राइट? तो ये आपको इसके लिए ऐसे कोई भी किताब नहीं है जिससे आपको पता चले, क्योंकि यहाँ पे जो लेटेस्ट इश्यूज है, लेटेस्ट इवेंट चल रहे हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको बताता हूँ कि यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़नी है, जो भी यूपीएससी, एमपीएससी और कंबाइन, तो इसके लिए आपको करंट अफेयर मस्ट है। कोई भी सब्जेक्ट्स लो, उसका एक दो ही है, एक फैक्चुअल डेटा और एक करंट डेटा, राइट? इसी बेस पे आपके नोट्स बनने चाहिए, राइट? So there is a GS2 is over, right? तो आई होप आप ये नोट करो, ये डिकोड किया हुआ सिलेबस है, आपके नोटिफिकेशन में जो है वो डिकोडेड नहीं है, हमने डिकोड किया है। यहाँ पे आपको जाकर यहाँ पे प्रिसाइज नोट्स बनाने हैं। अभी उसके बाद हम बनाएंगे GS3 के ऊपर, सिलेबस को डिकोड करेंगे, राइट? सो थैंक यू।